Hello and welcome to brand new episode of ARD di Baithak. आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो खुद भी आप कहें कि ऑलराउंडर है। अगर हम उनकी इंट्रो या जर्नी की बात करें, 2013 में बहराम ने अपना करियर स्टार्ट किया ट्रिब्यून की तरफ से। उन्हें आर्टिकल राइटिंग करते थे। उसके बाद उन्होंने पीटीवी वर्ल्ड को ज्वाइन किया एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट। फिर उन्होंने ज्वाइन किया अपना ही यूट्यूब चैनल, उन्होंने क्रिककाजी खोला, जिसको आप विजिट कर सकते हैं और उनकी वीडियोस और उनकी जर्नी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ग्रास रूट ज्वाइन किया, देन ही केम बैक टू पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने जितना भी पाकिस्तान का होम टेस्ट सीजन था 2022 2021 वो कवर किया, सॉरी 2023 वो कवर किया। और अब वो ग्रास रूट के साथ पैनलिस्ट है हिजाब जाहिद के साथ, जो इंटरव्यू में आप देखते हैं इनको। और अभी जेरड कम्बर के साथ भी ये पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। सो वेरी वार्म वेलकम बहराम, थैंक यू सो मच फॉर joining us, for taking time. I hope you're well. Thank you, Kissa, and thank you everyone else for the warm welcome and of course for inviting me to your show. और I recall कि जब मैंने अपना YouTube channel start किया था in 2021, which was actually 2 years ago, 4th July 2021 था, तो not a lot of people were in this space creating content पाकिस्तान cricket के ऊपर या पाकिस्तान से cricket के ऊपर। 2-4 गिने चुने लोग थे, and ever since I've seen a lot of people come into the industry and आप लोगों की तरह कोशिश कर रहे हैं to break into the industry, and I have mad respect for you guys as well, and more power to you. I wish you the best of success, and yeah, once again, thank you for the lovely intro. Very well researched, I must say. Thank you so much, Behram, and yes, all thanks to Ahmed for that. इतने मजे की रिसर्च करते हैं ये। अच्छा, अगर हम शो की हम बात करते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, हम सबसे पहले जो है ना, मैंने आपसे पूछते हैं कि जो आपका ट्विटर हैंडल है डेफ मैंगो, इसके जरा थॉट प्रोसेस बता दें, कोई रीजन बता दें, ये क्या है डेफ मैंगो, क्या है इसके पीछे, थोड़ा थॉट प्रोसेस हमें बता दें। तो ट्विटर जो है ना, मैंने बनाया था बिल्कुल जब मैं छोटा, लाइक आई वाज लाइक अ टीनेजर, 15-14 का। आई थिंक इट वाज इन व्हाट 2009-10 इस तरह मैंने बनाया होगा। और तब तो बस बहराम 22 कर दिया था मैंने, कुछ ज्यादा सोचा नहीं। और इवन व्हेन आई वाज राइटिंग फॉर द ट्रिब्यून, उसके अंदर वो जो अभी भी आप जाओगे ट्रिब्यून के ऊपर तो मेरा हैंडल बहराम 22 ही लिखा आएगा। आई थिंक इट वाज 2018 या 19, जिसके अंदर जस्ट इपिफनी जिस तरह आपको हो जाती है कि ओ बहराम से बहरा आम बनता है, एंड देन दैट्स डेफ मैंगो, एंड आई लव माई सेल्फ अ पन। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। और फनली इनफ लॉट ऑफ पीपल डिडंट कैच ऑन टू इट, लाइक बहुत देर बाद कहीं जाकर लोगों को थोड़ा पता चला कि अच्छा ये हो रहा है यहाँ पे, वरना नो वन हैड कॉट ऑन टू इट। तो ग्रेट है बहराम भाई। Yeah, thanks. Yeah, wonderful listening. I really wanted to know about it. Thank you, Kisa, for asking. Behram bhai, आपकी जर्नी की तरफ आते हैं. I am in foreign as well. I can associate with you in a way. Of course, आप कनाडा में रहे, आपने स्टडी की, alongside आप PTV वर्ल्ड के लिए काम कर रहे थे. So हम आपके ग्लैमर फेज देख रहे होते हैं कि now he is doing podcast. I am kind of taking you back to your struggle days especially. और मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कोविड वाले फेज पे, बिकॉज मेंटल इश्यूज एंड व्हाट नॉट। यस, आपका फॉरेन में रहने का एक्सपीरियंस होता है, बट अगेन टू डू सच बोल्ड स्टेप, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के इन द कोविड डेज, व्हाई who pushed you and why did you take that step? थोड़ा वो रिवाइंड करवाएं। अच्छा सवाल है आपका। आई गेस टू गो बैक ऑल द वे टू 2013 व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर द ट्रिब्यून, दैट वाज लाइक फॉर ब्लॉग्स ट्रिब्यून, वो तब बड़े पॉपुलर हुआ करते थे उस टाइम पे। अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू रीड दैट, सो आई लिटरली वाज हैविंग अ डिबेट विद माय फ्रेंड। ये बड़ा एक ढीठ किस्म का दोस्त था मेरा जो कंसीड नहीं करता बिल्कुल भी, और उसको मैंने कंसीड करवा दिया जस्ट हैविंग a conversation with him or a debate with him, and he said that why don't you write? And I just randomly wrote a piece and sent it to Blogs Tribune, तो वो छप गया. That gave me a lot of confidence, क्योंकि I have been a cricket tragic since 2002-2003, and मतलब वो उस टाइम पे तो पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ भी बड़ा गिर गया था 2003 के वर्ल्ड कप के टाइम पे। तो it's surprising how I became a fan, but तब से मेरे दिमाग में था ये कि ये करना है। आई यूज्ड टू हैव अ विजन पिक्चर, आई एम बिग ऑन विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन, और उसको आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। जिस तरह हम दुआ करते हैं, किसी चीज की उम्मीद करते हैं, तो मेरी एक स्क्रीन सेवर टाइप वॉलपेपर होता था जिसके ऊपर जॉन डाइक्स की तस्वीर होती थी, हु वाज स्पोर्ट्स सेंटर का न्यूज कास्टर। सो आई जस्ट हैड दैट इन माय ब्रेन, और फिर जब ये मैंने आर्टिकल लिखा तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। यार ये तो मतलब आई डिडंट इवन हैव टू ट्राई दैट हार्ड एंड आई गॉट पब्लिश्ड। सो
I used to write whenever I felt inspired. और फिर जब मैं पाकिस्तान छुट्टियों पे आता था ना कनाडा से, because I was there for 11 years. I left in 2011 और मैं अभी पिछले साल नवंबर 2022 में वापस आया हूँ. So 11 साल बाद आया हूँ. And basically वापस जब मैं आया तो फिर मैंने ट्राई किया कि यार इस तरह किसी तरह टीवी पे आ जाएं. तो I started hounding PTV World because that was the only English channel and I thought I had a bit of an edge over there. क्योंकि basically I was well versed in the language and I thought कि शायद कुछ बन जाए. I had a portfolio of articles. So somehow I lucked out. I got a gig for FIFA World Cup 2014. Yes. वो जब मैंने पीटीवी पे टीवी पे कवर करना शुरू कर दिया, पैसे किसी चीज के लिए मिल रहे थे, ना टीवी के और ना एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, तो फिर उससे जरा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया. एंड 2013 टू 2017 में इंटरमिटेंटली ये करता रहा सारा कुछ. फिर मैंने छोड़ दिया. 2017 to 2021 I didn't do anything and I was focusing on my corporate career and basically I was मैं पासपोर्ट लेना था. वापस पाकिस्तान आने का प्लान हमेशा से था दिमाग में, because I'm a very family oriented guy. I love being around my loved ones. फैमिली ले लें, दोस्त यार ले लें, प्लस इस्लामाबाद में बड़ा होकर एक शहर से भी थोड़ी मोहब्बत सी थी. एंड आई गेस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मेंशन करना जरूरी है कि आई हैड दैट प्रिविलेज टू मेक द मूव बैक. देखिए यहाँ पे आकर मुझे रेंट नहीं देना पड़ता, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फूड बिल्स, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स. Even if I'm not making a lot of money doing cricket stuff right now, I can afford to do that because I have savings, Canada की सारी, और यहाँ पे मेरे खर्चे नहीं है. तो ये सब मेरे back of the mind में था. So yes, you can call it a bold move. एक तरह से, क्योंकि आप अच्छी सैलरी और फर्स्ट वर्ल्ड छोड़कर आ रहे हो, बट माई लाइफ ओवर हियर वाज वेरी कंफर्टेबल. तो उस लिहाज से मुझे आसानी भी थी. आई विल बी अपफ्रंट अबाउट दैट एंड आई विल डेफिनेटली एक्नॉलेज द प्रिविलेज. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सो. और आई थिंक बस जैसे ही वो कोविड वाला पीरियड शुरू हुआ ना और वर्क फ्रॉम होम वाली जिंदगी शुरू हो गई, a year into that I realized कि I haven't done anything in cricket for 4 years और मैं अगर आगे करना चाहता हूँ मुझे कुछ करना पड़ेगा. तो कोविड एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू मेक यूज ऑफ दैट टाइम, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में ना आपके पास टाइम निकल आता है आगे रात को. तो फिर मैंने कहा अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देते हैं. वैसे भी कोविड वाज टेस्टिंग, एज यू नो, बाहर कनाडा में बड़ा स्ट्रिक्ट था सारा कुछ. तो इट हैड टेकन अ मेंटल टोल एंड एवरीथिंग. दैट्स ऑल वेरी रियल. इट वाज अ वेरी वेरी टफ पीरियड ऑफ माय लाइफ. तो उस सारी एनर्जी को मैंने फिर चैनल कर दिया अपने YouTube चैनल में, एंड आई वेंट क्रेजी. लाइक मैंने आधे साल में कोई 94 वीडियोस बना ली, एंड दैट अल्टीमेटली गॉट मी नोटिस बाय ग्रास रूट्स, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो आगे रास्ते खुलते गए हैं फिर वहां से खुलते ही गए हैं. एंड आई मीन आई डेफिनेटली डू टेक आउट द टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट. लाइक अल्लाह मियां का बड़ा करम है. तो बहराम, इस सेगमेंट में करना यही है कि आई विल आस्क यू ऑल द राइट क्वेश्चंस एंड ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी ऑल द रॉन्ग आंसर्स. All right. I like that. Yeah, let's just make it fun for the YouTube and the Twitter. So, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि what is your most favorite PSL team? Karachi Kings. ये आगे उससे को समझदार हो. ये मैं रैंकिंग करना चाह रहा था, तो पता नहीं ये कहाँ आता फेवरेटिज्म में. चलो ठीक है, ये मोस्ट फेवरेट पूछा था, तो मोस्ट फेवरेट है. चलो इसके बाद बहराम, मतलब अभी जो सारा फटा हो रहा है बेयरस्टो का और वो आउट करने का, तो इसमें व्हाट डू यू थिंक कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? ये रूल्स में ये चीज गुंजाइश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? व्हाट डू यू से? आर वी स्टिल प्लेइंग द गेम? यस, आप मुझसे. इट इज द गेम. Interesting, very interesting, क्योंकि I have a lot to say about that, but now I have to like rewire my brain. I think कि बहुत अच्छा हो रहा है ये, और बिल्कुल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है. इस तरह आपको बैट्समैन को स्टंप नहीं करना चाहिए. फास्ट बॉलर पे स्टंपिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए. दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, और मैं काफी खिलाफ हूँ इस सब के. और मेरे ख्याल से कि जो डिस्पैरिटी है ना लॉज और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की, वो बहुत एक अच्छी चीज है. या दैट्स व्हाट आई विल से. I wanna listen this all day. Harsh truths here. एग्जाम आपने बहुत दिए होंगे, कनाडा भी लगा आप गए, तो कनाडा हो या पाकिस्तान हो, कभी एग्जाम की फेल किया आपने? कभी कोई एग्जाम की सप्ली आई हो? मैंने प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी 3 दफा फेल नहीं की, एक भी सब्जेक्ट. यार, तो यार वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है, एंड वी आर ऑल एंटिसिपेटिंग ऑल बंच ऑफ थिंग्स. तो कौन जीतने वाला है वर्ल्ड कप? ऑब्वियसली नेदरलैंड्स जीतने वाली है, ये तो कोई पूछने वाला सवाल नहीं. आप देख रहे हैं किस तरह वो क्वालिफायर्स में अब मोस्ट प्रॉब्ली आगे आ जाएंगे.
स्कॉटलैंड को अगर नेदरलैंड्स ने हरा लिया तो वो वर्ल्ड कप खेलेंगे एंड बेस्ड ऑन ऑल द एविडेंस वी हैव ऑफ देम डिफीटिंग साउथ अफ्रीका देन द वेस्ट इंडीज एंड नियरली डिफीटिंग श्रीलंका ऑब्वियसली फेवरेट्स अगर आप मुझसे कोई पूछोगे तो इट्स लाइक अ नो ब्रेनर द डच इतना ऑब्वियस आंसर भी वैसे नहीं देना चाहिए था। खैर ये क्या कहते हैं इतने इसको, ऑब्वियस सवाल नहीं पूछने चाहिए ना आपको, ये तो बस स्टेयरिंग क्या कर सकते हैं। ये मासूमाना सवाल जो है ना मेरे पे फेंके दिए हैं, कुछ भी मैंने क्रिएट नहीं किया, ये मेरे पे डाले गए हैं। ये लास्ट मिनट मूवी में अहमद ने कहा यार ये पूछो ऑब्वियस क्वेश्चन। तो खैर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन के कमेंट्री इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रिकेट। जो भी टीवी पे देख रहे होते हैं और कुछ कमेंटेटर्स होते हैं वो दिल के बड़ी करीब होते हैं, वो ऐसा कौन सा कमेंटेटर है आप कहते हैं यार ये मैं सारा दिन सुनता रहूंगा इसको, जब बोलता रहे। ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। आई वुड हैव टू से चिश्ती मुजाहिद मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं जिंदगी में। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव एवर हर्ड चिश्ती साहब। एंड और कौन है, अतर अली खान, एब्सोल्यूट फेवरेट बेस्ट कमेंटेटर। बिल्कुल, उनकी कमेंट्री को जब बांग्लादेश का टूर हो रहा था हम सबने बहुत एंजॉय किया था, बहुत ज्यादा। मुझे दिल ही नहीं चाहता कोई मैच देखने का जिसमें अतर अली खान कमेंट्री ना करे। अच्छा, अगर यहाँ तक बात आई की है तो इधर रमीज राजा और अतर अली खान, इन दोनों में प्रैक्टिस को चूज करते हैं। इन दोनों में ऑब्वियसली अतर अली खान को आप किसी के सामने भी रखते हैं, कॉल इट और बीट माइक एथरटन और नासिर हुसैन, बम्बल, माइकल होल्डिंग, इन सब का यहाँ है लेवल और फिर अतर अली खान इधर है। तो आई थिंक दैट जस्ट टेल्स यू द होल स्टोरी। एक सवाल आपने मुझसे नहीं पूछा, आपने मुझसे मेरा फेवरेट क्रिकेटर नहीं पूछा। लेकिन फेवरेट क्रिकेटर तो मशरफ मुर्तजा हो सकता है, पता नहीं क्या क्या नहीं हो सकता है, उमर अमीन हो सकता है। आई मीन उमर अमीन, बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं। लेट्स पोज द क्वेश्चन टू यू, आपको अपना जवाब मैं बाद में दे दूंगा। व्हाट्स योर फेवरेट क्रिकेटर और हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? सॉरी यार, उमर अमीन से बेहतर क्रिकेटर है ही नहीं मुझसे, अगर आप पूछ लो। उमर अमीन द बेस्ट। व्हाट अबाउट यू गाइस? अहमद तुम बता दो यार। Sohail Tanveer, IPL hat-trick. I mean, you can't match him. T20 World Cup winner. You can't match his class. कैसा? Rory Bund. Okay. Love the hair. For me, Imran Farad. अच्छा, yeah, that's a good one. One of my favorites as well. I think catching जितनी अच्छी इमरान फरद की थी ना, उतनी मैंने शायद जिंदगी में किसी की देखी नहीं होगी. But my favorite cricketer is Gautam Gambhir. How could it not be? Oh, what a shout! What a shout! The best answer. 7 करोड़ आपके हुए. तो अब वैसे अब ये गेम एंड होती है तो बाकी सही वाले जवाब देते हैं. तो now obviously Mudassir is going to ask you further. Like, sure. Let's. Okay, बहराम भाई, जिस तरह हमारे पास ना काफी बेसबॉल की आपने देखा कि हाइप क्रिएट हुई है. So how do you see how baseball is important or impactful for content creators or its impact on overall on cricket? So how do you see it? देखिए, आई थिंक बेसबॉल की अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो दे स्टिल हैव वन 11 आउट ऑफ 15 टेस्ट मैचेस. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से 2 ऑन द बाउंस हार गए, बट इफ यू रियली लुक एट दोस गेम्स, कोई वन साइडेड गेम्स नहीं थी. दे वर वेरी क्लोजली कंटेस्टेड फिक्सचर्स. इनफैक्ट इंग्लैंड कुड वेरी वेल बी 2-0 अप. मेरे हिसाब से बेसबॉल में काफी अच्छी चीजें हैं एंड देयर क्वाइट अ फ्यू इनोवेटिव थिंग्स व्हिच आर हैविंग एन इंपैक्ट ऑन क्रिकेट. जिस तरह तेज स्कोर करना, तो ऑब्वियसली दैट्स द ऑब्वियस वन, राइट, इन टेस्ट क्रिकेट. बट देयर इज मोर टू दिस. इट इज डिस्टर्बिंग द लाइन एंड लेंथ्स ऑफ बॉलर्स. आपने देखा कई इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं क्रीज से बाहर बैटिंग कर रहे हैं, and a lot of other people have tried that as well. Balki we've also seen keepers come up to the stumps to counter that. Isko Jared Kimber, he terms it as the BazBall shuffle. Of course that's not to say कि ये BazBall से पहले होता नहीं था, मगर मेन स्ट्रीम कर दिया इन लोगों ने इस चीज को. उसके बाद आप फंकी फील्ड सेटिंग्स देखे बेन स्टोक्स की. आई लव दैट. यू नो, जिस तरह वो अटैकिंग फील्ड सेट करते हैं. पाकिस्तान वाली जो सीरीज थी, टेस्ट सीरीज, I think he was impeccable when it came to those attacking field sets. Or it's just, yeah, it's a spectacle, and I think that will have an impact on the game at large. Or apart from that as well, you can just talk about like rhythm में ना आने देना bowlers को, और batters जो हैं थोड़े innovative strokes try कर रहे हैं. You've seen Joe Root attempt the reverse ramp like it's second nature to him now. अब तो वो इस तरह करते हैं जिस तरह वो forward defense कर रहे हैं. और मेरे ख्याल से ये सारी अच्छी चीजें थी, and BazBall was a good method to bring about results, but it isn't something that can't be questioned. यहाँ पे मसला हो गया. Because I feel like they've made it a thing कि Brendan McCullum ने ये कह दिया है and we're just going to go hard, attack even more. और इससे
you're papering over the actual cracks and not looking to improve on what is going wrong. और यहाँ पे मेरे ख्याल से this might be counterproductive. और अगर तो ये इस चीज से snap out नहीं करते, शायद कर गए हों, शायद अपने ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल सही तरह बातें करते हों और ये एक PR stunt हो कि हम दिखाएंगे ये, we're not going to like lose the mental battle. Maybe that's what they're doing. Maybe that's what they're not doing. Maybe they have, you know, turned a blind eye towards all those things that they could improve on. And that's my major issue with BazBall, कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप बस, you know, this is the be all and end all and it is the only way to play cricket और बाकी लोगों को adjust करना पड़ेगा BazBall के लिए, नहीं करना पड़ेगा. ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस हैं और 2 लगातार मैच खेल गए हैं और बिल्कुल अपने तरीके से क्रिकेट खेलते हैं. उस्मान ख्वाजा की आप इनिंग्स देख लें सारी, तो he's taken his time, he's picked his battles very wisely. And one last thing I just like to say about BazBall and my issues with it is कि in this last test match, the Lord's test, right? आपको पता है नेथन लायन इंजर हो गए, आप 188 for 1 हो, ठीक है, आपने तकरीबन यू नो काफी हद तक मैच बचा लिया हुआ यहाँ पे, you're looking very good. Why would you buckle under 80 overs? अगर वो शॉर्ट बॉल कराई जा रहे हैं तो आप थोड़ा देखकर खेल लो, थोड़ा डक कर लो. हर किसी के ऊपर इस तरह झाड़ू फेरना जरूरी नहीं है, because ultimately हुआ ये कि you didn't tire out their pacers and it's a 5-match series. So अगर आप उनके pacers यहाँ tire out कर दो, आपको आगे भी इसके benefits मिलेंगे जिनके rewards आप reap कर सकते हो. So I think that was really baffling कि आपने वो चीज ही नहीं की. You didn't tire out their pacers, आप जल्दी आउट हो गए. स्कोर आपने कर लिया होगा, but you've left pretty much 50-60 runs out there in the field and you haven't tired their pacers who were pretty fresh in that second innings. और हुआ क्या, आप 45 रन से हार गए. So that could have been the difference. So I think BazBall has flaws, it needs to be tweaked and it isn't this holy grail कि बस आप इसी को इसी तरीके से बगैर क्वेश्चन किए फॉलो करोगे. I think कि इंग्लैंड को ये एटीट्यूड अपना बदलना पड़ेगा and it's just their defensive BazBall. जिस तरह अगर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ऑली रॉबिन्सन, जिमी एंडरसन, Zach Rowley's coming in saying we'll beat them by 150 runs. I think this is a bit ludicrous and इस तरह की चीजों से जरा रिफ्रेन करना चाहिए and focus on your cricket. PR वाली साइड will take care of itself. आप नहीं भी बोलोगे ना ये कि it feels like a win lads, कोई ना कोई जर्नलिस्ट लिख देगा ये कि जिस तरह वो खेले हैं वो बड़ा जबरदस्त था. ये आपको खुद बातें नहीं करनी चाहिए. Tooting your own horn is never attractive and I think that is where they have messed up big time. ओके बहराम भाई, इसमें थोड़ा ऐड कर दें कि मतलब बेसबॉल किस तरह जर्नलिज्म को लाइक ओवरऑल कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह के लिए किस तरह इंपैक्ट कर रही है, इसका थोड़ा सा वो आप अपना व्यू दे दें. हमें तो content creators and journalists को तो fodder मिला हुआ है. BazBall is exciting, it's entertaining, it is the best thing that is, or well, the most entertaining thing. ये तो आपको देना पड़ेगा उनको, that has happened to Test cricket in a while. You think about West Indies की team 80s वाली, then you think about the Australian team उसके बाद जो बहुत अच्छी चली गई. South Africa was really good for a while. But I don't think anyone has captured our imagination quite like Stokes and McCullum have with this English team. So मेरे हिसाब से journalists के लिए और viewers के लिए सब के लिए it's an intense amount of fodder and we cannot complain. अगर चलता है तो हम उसके तारीफ कर सकते हैं, अगर नहीं चलता जो कि आजकल नहीं चल रहा, and then their reactions on top of that is giving us even more fodder. और बातें करने को मिल रही है इसके बारे में. तो I think this is a win-win for everybody. Maybe not for England though currently because अब 2-0 down है और अगर तो ये Ashes यहाँ हार गए तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि जब आपको याद होगा BazBall शुरू भी हुई थी ना, everyone was like okay but we'll see how it plays out in the Ashes. हर बार यही बात होती थी. हमारे पास जब इंग्लैंड आई हुई थी इधर पाकिस्तान, तो I would ask all of them कि what's your take, ये वो माइकल एथरटन वगैरह से ही पूछा. Everyone said that we'll see how it fares in the Ashes and we are seeing that in real time. So for the sake of BazBall, because I really like a lot of things that it brings to the table, I hope that they are able to get some success over here. अगर तो ये whitewash हो गए या बुरी तरीके से हार गए तो फिर I don't know how they proceed from here because तनकीद तो already होना शुरू हो गई है, as you can see. Okay, thank you. Kisa, over to you. मेरा नेट थोड़ा स्टक हो गया था. वीडियो क्लियर है? जी. अच्छा बहराम, आपको हमने देखा है कि आप प्रेशर्स में जाके क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, आप अपना क्रिकेट का एनालिसिस कर रहे होते हैं. तो आई रियली वांटेड टू आस्क कि एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एनालिस्ट, आपकी की पॉइंट्स क्या होते हैं, आपका होमवर्क क्या होता है, आपका डेकोरम क्या होता है कि आपने कैसे सर्च करनी है, कैसे अपने पॉइंट्स को डिफेंड करना है या कन्वे करना है. तो क्या पूरा थॉट प्रोसेस या होमवर्क होता है? काइंडली हम इस बारे में जरूर बताएं बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस एज वेल. And Behram, sorry to cut you off.
I just एक सब topic भी add कर ले and how important because uh, if I am right आप चेल्सी को भी support करते हैं like you have you watch football as well so how important is that कि आपको other sports के भी analogies वगैरह पता हो whatever you are doing to do in recordings podcasts so that आप फेंक सको so I wanted to learn about that stuff as well how much it helps and of course किसा का baseline question मौजूद रहेगा yeah पहले मैं आपका जवाब देता हूँ अहमद आई थिंक इट डेफिनेटली हेल्प्स टू वॉच अदर स्पोर्ट्स आई नॉट ओनली हैव बीन अ चेल्सी फैन इंटरनेशनल फुटबॉल में आई हैव बीन अ जर्मन फुटबॉल फैन यू नो वर्ल्ड कप भी जीते 2014 में सो आई हैव दोस मेमोरीज आई यूज्ड टू बी अ बिग राफा नडाल फैन अनफॉर्चुनेटली यू नो ही इज इंजर्ड राइट नाउ एंड देन आल्सो आई हैव फॉलोड अ बिट ऑफ बास्केटबॉल सो देखी मैंने काफी स्पोर्ट्स हैं यू पिक अप डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देम स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू योर वर्नाक्युलर आपकी vocabulary भी बढ़ जाती है and in my line of duty it really helps to have a broad vocabulary and different sports help with that for sure मगर आपको मैं honestly बताऊं ever since I've gone knees deep into cricket ठीक है क्योंकि अब तो बस सारी क्रिकेट देखनी पड़ रही है ना पहले तो आप अपनी कन्वीनियंस पे देखते थे now it's like I cannot miss it I have to watch it so that I can talk on it तो जितना मैंने टाइम क्रिकेट पे लगाया पिछले साल में आप कह लो कि बाकी स्पोर्ट्स थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई you know and Chelsea had a terrible year so that wasn't really hard to anyway or Nadal is injured like I said so definitely it's useful to watch other sports it's useful to just you know keep an open mind with respect to life in all spheres क्योंकि आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो and the learning process should never stop growth and learning mindset I think is the most single important thing towards you know living a successful life so wo to you should always have your you know ears open and just keep an open mind ताकि आप अपने horizons broaden कर सको with respect to anything. बाकी किस्सा's question I think is a very very good one because देखिए when I was coming back to Pakistan I had no idea कि मुझे इतना press pass मिल जाएगा और मैं जाकर इतना सवाल पूछ सकूंगा वो तो मतलब मैंने सोचा था कि होम सीजन आ रहा है it's best to be there right यही टाइम है जाने का इतनी क्रिकेट कभी पहले पाकिस्तान में आई नहीं है so I can't just stay in Canada and expect कि मेरी यहाँ पे बैठे बैठे growth हो जाएगी I need to go and dip my feet into that actual water so I was very lucky that when I had that conversation with grassroots, I was able to get a press pass. और उसके ऊपर फिर it wasn't like I had any direction or anything. I was just told to go there and different चीजें try कर लूँ and I just literally मैंने सब कुछ कर लिया. I was writing a piece daily. I was doing fan cam interviews and I was doing these press conference questions. I learned very early in the game कि press conference में अगर आपका वाला सवाल पूछा जा सकता है कहीं और someone else could ask you a question. So go in with 2 to 3 questions. और क्योंकि मैं लिख रहा होता था सारा दिन तो सारा कुछ तो मेरे दिमाग में वैसे ही होता था बट माय एम वाज कि सवाल के दौरान 2-3 चीजें करनी है एक तो अपना प्लग करना है एज यू ऑल नो मैं हमेशा कहता था कि दिस इज बहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट बिकॉज एंड दिस इज अ बिग लाइक पीस ऑफ अनसोलिसिटेड एडवाइस कह लो आप ऐसे क्योंकि इतना करना तो नहीं चाहिए मगर आप लोगों को मैं ये जरूर बोलूंगा कि नेवर बी अफ्रेड टू प्रमोट योरसेल्फ बी शेमलेस when it comes to promoting yourself क्योंकि you are your biggest critic and promoter तो उसमें कभी आपने ये नहीं सोचना कि यार ये ज्यादा तो नहीं हो गया करो इसी तरह लोगों के दिमाग में बैठेगा तो एक मेरा ऑब्वियसली प्लग होता था इसमें ग्रासरूट्स क्रिकेट का भी फायदा था पीपल गॉट टू नो अबाउट इट एंड उसके बाद इट वाज यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एथलीट्स अगर उनका बुरा दिन भी गया हो आप उनको इज्जत दो तमीज से बात करो और I was never looking to fetch a headline or create or stir up a controversy or something like that. मेरा हालांकि हो गई हैं by default कुछ ना कुछ but मेरी intention नहीं होती थी that was never the intention and बस I really wanted to make sure कि player को ये अंदाजा हो कि you know उसकी इज्जत की जा रही there is respect for him and then lastly I wanted my question to be insightful कि कोई ना कोई मुझे इससे information मिले और usually उसमें होता ये था कि मेरे अपने दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होते थे so I used to somehow incorporate that और कोई ना कोई information insight करने की कोशिश करता था players से in a way where they would actually be able to answer अब इसके अंदर आप गलती भी करते हो जिस तरह मैंने एक दफा शायद नसीम शाह से पूछ लिया था कि आप किस तरह फॉर्मेट्स अपने मैनेज करना चाहते हो सारे That's not a good question because हम सबको पता है कि नसीम शाह will say कि मैं सारे खेलना चाहता हूँ यही होता है पाकिस्तान में so इस तरह आप सीखते हो and you want to be able to ask something जिससे आपको कुछ अच्छा मटेरियल मिल जाए आगे से you can either write about it then or it could become a clip that could go viral it could be information that the mass or well population of sport watching people would benefit from कि आपको भी वो जवाब सुनकर कोई फायदा हो आप कोई नई चीज सीखो तो that was my basic thought process और हमेशा 2-3 सवाल साथ लेकर जाता था और yeah I mean it was
very rigorous क्योंकि हमारे press box में it's not very common to see people just go hard at writing. And I'm not saying कि लोग काम नहीं करते, मगर I just felt like I left everything out there on the table. जितना मेरे अंदर juice था मैं सारा निकाल कर आ गया था. And it does get hectic, but press conference में एक आपको kick तो मिलती है. You're talking to your heroes. And I mean, when I got to ask questions from Ben Stokes and Babar Azam and these sort of people who I look up to and are, you know, I'm a big fan of, तो आपको थोड़ा compose करना पड़ता है अपने आप को. It takes a bit of practice, but ultimately you get a hang of it, and then it's something that you're looking forward to. Like, अगर मैं किसी match पे जा रहा हूँ cover करने, the one thing that I'm looking forward to most is the press conference question. Wonderful listening segment, and I think जो मैं आपकी चीजें रेट कर रहा हूँ, जो have mentioned it, but again मैं जरा प्रेस करना चाह रहा हूँ आपको, जिस वजह से मैं इंस्पायर भी होता हूँ पर्सनली, and that is जिस तरह आप प्लेयर्स के मेंटल लेवल को कंफर्ट जोन प्रोवाइड करके क्वेश्चंस थ्रो करते हैं, that is the main key takeaway which जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने का मौका मिलता है, especially whenever you throw the question, like it is quite obvious कि आप किस frame of mind से वो question पूछना चाह रहे हैं, and that again players should be highlighted, not any journalist, not anything else. So yeah, big up for that. Usama, and ultimately देखिए, just to add to that, even if these players fail, they're representing your country, they're ambassadors of Pakistan, they're wearing that gold star, that's already enough. आपको उनको इज्जत देनी है, वो बेशक बुरी तरीके से हार क्यों ना जाए, आपको उनको इज्जत देना बहुत जरूरी है. You have to respect your athletes. So इसी से segue कर लेते हैं क्योंकि जर्नलिज्म पे बात आ चुकी है. So Usama, let's start with Twitter and stuff like that. हाँ बिल्कुल. लाइक अभी बहराम आपने बात की कि किस तरह आप स्टार स्टक हो जाते थे जब भी क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है क्रिकेटर से बंदा मिलता है, तो ट्विटर और सोशल मीडिया हैज सॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशनाइज्ड दैट थिंग कि आपको एक एक्सेस मिल जाती है, एक डायरेक्ट एक्सेस होती है, और इस तरीके से उसका एक अच्छा रोल भी है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू सी इट, के किस तरीके से क्या कहते हैं ट्विटर पे जिस तरह से जर्नलिज्म हो रहा होता है, और वहाँ पे लाइक ट्विटर हो गया या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, थोड़ी सी चीजें टॉक्सिसिटी की तरफ चली जाती हैं कभी कभार, ठीक है. तो लाइक में डाल रहा है मुझे, पकड़ चलो पूछो. नहीं मुश्किल स्पॉट कोई को नहीं, लाइक जस्ट अ जनरल आंसर. What is the question exactly? Can you इसमें यही है कि ट्विटर टॉक्सिसिटी वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है प्लेयर्स को या जर्नलिज्म स्पेस को एज अ होल. तो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? सबसे पहले तो I mean no disrespect to any of my fellow journalists. सबको, you know, everyone is allowed to express themselves the way they want to and, you know, go with an approach that they feel works for them best. इसमें मैं कोई किसी के, you know, वो नहीं कहूँगा कि आप इस तरह क्यों काम कर रहे हो, you do you. ठीक है, I'm going to, you know, follow my own brand जो मैं establish करने की कोशिश कर रहा हूँ. किसी और ने कोई फर्क तरीके से करना है तो वो करें, but there is a general, you know, overarching sort of feel of controversy, toxicity और हेडलाइन ग्रैबिंग. तो प्लेयर्स को ये चीज महसूस होती है बिल्कुल, मगर प्लेयर्स मेंटली काफी टफ है पाकिस्तान के. दे डोंट लेट इट इम्पैक्ट देम. ये मैंने नोट किया है, बाबर आजम को भी प्रेशर से मैंने नोट किया कि उनको कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ता. एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड ट्रेट टू हैव, क्योंकि मीडिया नॉइज और सब चीजों को, आउटसाइड नॉइज को ब्लॉक आउट कर अपनी गेम पे ध्यान देना, this is a trait of any sort of athlete or cricketer or whatever who is mentally very strong. So cricketers have found a good way to deal with it. I have obviously I'm not that, you know, old on Twitter. वैसे तो मैं काफी देर से ट्विटर पे हूँ, मगर मैं एक्टिव नहीं था, मैं बिल्कुल यूज ही नहीं करता था. And the only reason why I actually started using Twitter was to build a presence, ताकि I can be heard और मैं अपना भी आगे कुछ, you know, promotion कर सकूँ, काम दिखा सकूँ लोगों को अपना. And now I started to do a bit of personal stuff as well, because I feel a bit of a connection with the followers. तो मैं कहता हूँ कि चलो personal life भी थोड़ी share कर लेते हैं. But देखें, the toxicity does get to you, ठीक है, आपको definitely impact करती है. अगर मुझे काफी गालियां पड़ रही हैं तो ऐसी बात नहीं कि मुझके ऊपर, मेरे ऊपर उनका असर नहीं होगा. डेफिनेटली होता है. इट डज एट टाइम्स गेट टू यू, बट द बेस्ट थिंग टू डू एट दैट टाइम इज कि आप एक तो आपकी जो जिंदगी बाहर है सोशल मीडिया से, उस पर थोड़ा फोकस कर ले. गो एंड स्पेंड टाइम विद द पीपल यू लव. एंड yeah, I mean, you have to develop thick skin, क्योंकि the more traction you get, the more haters you accumulate. It's just part and parcel of the gig. ये मैंने नोट किया, मुझे काफी लोगों ने एडवाइस भी की है कि ये होगा, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. सो इट वाजंट इजी फॉर मी एट द स्टार्ट. आई हैव हैड माय ट्रबल्स ऑन ट्विटर, बट अल्टीमेटली मैं, यू नो, काफी कुछ कह सकता हूँ ट्विटर पे. ऐसी बात नहीं कि मैं कह नहीं सकता. आई कुड बी वेरी वोकल एंड से अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस एंड दैट, बट
what I tell myself is that my ambitions supersede petty Twitter quarrels. Like मैं यहाँ पे Twitter पे Twitter clout या Twitter fame gain करने नहीं आया. This was just a means to connect with my followers and share my work. This is just a medium for me to be able to promote myself. That's it. और उसको उसी means तक रहने देना चाहिए. उसके अंदर ज्यादा मेरे ख्याल से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. एंड दैट वे आपका माइंड क्लियर रहता है. अगर कोई आपसे मतलब हड्डा लेने की कोशिश कर भी रहा है ट्विटर पे, तो बेहतर है कि आप पीछे ही हट जाओ. बिकॉज या एटलीस्ट इन माय केस, बिकॉज अगेन दिस इज नॉट माय सीलिंग. ठीक है, दिस इज जस्ट अ लैडर which helps me to share my work. And like I said, my ambitions supersede petty Twitter quarrels. So it took me some time to realize all of this, but once it did, वो आप कह लो कि काफी liberating feeling. Because all of a sudden now you don't really care कि आपके बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं, और बातें होती रहेंगी. अगर आप काम करते रहोगे, कुछ लोगों को बुरा लगेगा. और पाकिस्तान में खास तौर पे people have a tendency to get very very personal with their attacks on Twitter. It's just the क्या कहते हैं, name of the game by design इस तरह, unfortunately. And yeah, better to not pay as much heed to it, or head down, be honest with yourself, stay true to yourself. I've always tried to do that. मैंने कभी भी I've never tried to be someone who I'm not on Twitter. वो अब किसी को पसंद आए ना आए, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. And yeah, just I think everyone should just continue to be themselves. मगर हाँ, एक चीज आपको जरा देखनी चाहिए यार, कि you should always be careful and mindful of your tone online, because your tone could hurt someone. And I've tried my best to be respectful. It is a little disappointing when I don't see that reciprocated, but that's okay. I mean, ultimately it's a social platform and you meet all kinds of people, and there is no imposition in life, so everyone can do as they please. Baki, as for me, I will continue to carry on in the sort of professional manner जिस तरह मैं अपनी brand build करना चाह रहा हूँ. I just intend to keep on going in the same direction. थैंक यू सो मच बेहराम भाई. आपने हमारे लिए वे फॉरवर्ड करना चाहिए, वो भी काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया. सो एनी वर्ड्स ऑन पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट? यार, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस क्रॉप ऑफ फीमेल क्रिकेटर्स, क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान wasn't even playing women's cricket for a long long time. वो तो शाइजा खान और उनकी बहन ना होती, एंड देन कराची के अंदर जिस तरह उन लोगों ने पहले एग्जिट कंट्रोल लिस्ट्स पे आ गए, बहुत ज़्यादा मेहनत की पाकिस्तान की टीम एस्टैब्लिश करने के लिए. सो प्रॉप्स टू देम. आई थिंक वील ऑलवेज बी इंडेटेड टू दोज वुमेन, बिकॉज विदाउट देम देयर माइट नॉट हैव बीन अ टीम फॉर अ व्हाइल. और पाकिस्तान की टीम, let's be honest, we've produced some really good cricketers in the past. Sana Mir is the one that really, comes to mind first up. When you think of Pakistan cricket, you think of Sana Mir. Number one bowler bhi rahi hai, I think, ODIs ke andar. So, yes, we've had good cricketers, but we've never had a team which can actually compete. ये जो पीछे T20 World Cup गुजरा है ना, I kid you not, had Diana Baig been available, मुझे लगता है हम इंडिया वाला मैच भी जीत सकते थे, और हम वेस्ट इंडीज वाला मैच तो उसके बगैर भी जीत सकते थे. That's really unfortunate. It is a team that can compete. It is not just a team जिसका आउटसाइड चांस है अपसेट करने का. If they play good cricket, they have what it takes. और जो यंग क्रॉप आ रही है आपके पास, फातिमा सना, emerging cricketer of the year in 2022, if I'm not wrong, शायद पिछले साल था. And then you've also got Iman Fatma, जो कि ओपनिंग बैटर हैं, बहुत promising लग रही हैं, बहुत young हैं. Love to watch her bat. And I think she's just so talented. But my favorite one is Aisha Naseem. And Aisha Naseem पता नहीं इस वक्त injured है, कहाँ है, मुझे बड़ी फिक्र है उनके लिए. Hamstring उनकी पुल हुई थी वर्ल्ड कप में, तब से नजर ही नहीं आई. But she is someone who I think will be a game changer in women's cricket. She is that sort of player who can have a very big influence, like Shahid Afridi did on the men's game, right? Afridi के record को आप छोड़ो, impact को देखो Afridi के. That is massive. Aisha Naseem is the sort of cricketer who could have that sort of impact, at least in Pakistan. और जिस तरह वो मारती हैं, I mean, she absolutely bludgeons it. I think हम सारों की ताकत मिलाकर भी आयशा नसीम की शायद ताकत ना बनती है इतनी वो. That's how powerful a punch she packs. And मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस क्रॉप को लेकर. एंड आई थिंक कि थोड़ी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वुमेन्स टीम में, उसका जरा थोड़ा मुझे डर रहता है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नेवर सॉ बिस्वा हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड बोला कि यंग कैप्टन होगी नेक्स्ट. एंड देन वी सॉ निदा कमिंग इन. Mark Coles and Nida apparently get along really well, so that's why I think that is happening. There are some issues, but they are definitely on an upward trajectory, and the youth that is coming in और भी हैं यार, वो सैयदा अरूब शाह है, तूबा है, लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन में तो स्टैक्ड है पाकिस्तान. इसमें कहीं एक लेफ्ट आर्म सीमर मिल गई ना, that would be great for the क्या कहते हैं composition of the team.
Wonderful. Also, We really want. whilst we're on that, Yeah. I'm really, really happy to see you guys promote women's cricket. I think it's definitely zyada hona chahiye, and I love to see different platforms come up and do their bit and contribute. Or you guys are obviously new to the scene, but one thing I'll say is just keep at it. There will be times जहाँ आपको उतनी नहीं आपको लग रहा होगा कि growth हो रही है, but the consistency is the key. You have to remain consistent, or inshallah, success will come to you. All you need to do is be honest with yourselves, true to yourselves and your work, and just remain consistent. And I'm sure you guys are already off to such an amazing start कि आगे भी इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा success मिलेगी. Thanks, Behram. It is so heartening to hear coming from you. Of course, हम सब के लिए इंस्पिरेशन है. हमारी बैक स्टेज पे टीम है, अभी हैं, जो हैं, they are conveying their regards. They learn so much from you, Hijab at GRC. So big up to all of you, especially you, Behram. It has been wonderful episode. I must say, we all have enjoyed, and more importantly, जिस वजह से हमने आपको अप्रोच किया था, that is to get inspired and that is to learn the trade from you. So thank you for making the time. I really wanted to have a segment on your podcast with Jared Kimber, but anyway, we will keep it for the episode. Inshallah, We'll save something for next time. Inshallah. But thanks for inviting me. I had a blast. Let's बहुत keep it मजा आया. Yeah. And thank you for all the kind words. Yeah. Really nice to hear. And bas wahi, I'm really, really honored. I feel really humbled by all of the love and praise that's coming from you guys. And this is the sort of stuff that helps me keep going and is fuel for me, basically, to just do a better job than I am already doing and just try harder. Because room for improvement hamesha hota hai, and I just want to keep getting better and better. So really, really grateful that I got an opportunity to feature on your show. And thank you so much for the kind words and all the encouragement. And I hope you guys also, make a mark on the cricket content scene, basically online. And who's to say, शायद हम कई साल बाद बात कर रहे हैं, we're looking back at this episode when you guys have, covered a lot of ground. So inshallah, we'll live to see that day. Yeah. So viewers, I really hope we have done a little bit justice to Behram, his work, and to this show. More importantly, आप लोगों को hopefully हमने अच्छा content provide किया होगा. And the drill, you know it very well. In case भूल चुके हैं इतनी अच्छी discussion के बाद, let me remind you, hit the like button, share the video on your socials, subscribe कर दें और घंटे के घंटे जरूर बजा दें because you better not miss out on notification. So on this note, Behram bhai, thank you so much. Jitna salamat rahe viewers, aap bhi. Till next episode, Allah Hafiz.